Good morning, students. Myself Kiran Yadav. I am your English teacher of class first. How are you all? I hope you all are good today. This is your textbook, children, Marigold for class 1. So today we are going to start new unit number 6 and chapter number 11. If I were an apple. Okay, so open page number 64. Okay, so we have a poem, If I were an apple. So children, what does it mean? The poet is imagining, or we can say thinking, that how it would be if he was an apple. यहाँ पे पोइट इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है कि क्या होता अगर वह एक एप्पल होता. ओके, सो द पोम इज अबाउट ऑल इमेजिनेशंस. ओके, सो शैल वी मूव ऑन. यस. ओके. If I were an apple and grew on a tree, I think I would drop down on a nice boy like me. I wouldn't stay there, giving nobody joy. I would fall down at once and say, "Eat me, my boy." Okay? So children, here the poet is thinking that if I were an apple and grew on a tree, अगर मैं एक एप्पल होता तो मैं एक बड़े से पेड़ पे उग रहा होता. I think I would drop down on a nice boy like me. और मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि मैं मेरे जैसे ही एक अच्छे बच्चे के ऊपर जाके गिर जाता. So he is thinking that time if he was an apple and he was growing on a long tree, so he is thinking that if he was an apple, he will drop down on a nice boy like him. I wouldn't stay there, giving nobody joy. मैं उस पेड़ पे कभी नहीं रुक पाता. गिविंग नो बडी जॉय, मैं किसी को भी हैप्पीनेस नहीं दे पाता. आई वुड फॉल डाउन एट वंस एंड से ईट मी माई बॉय. मैं एक बार गिरता और बोलता कि मुझे खा लीजिए. किससे बोलता? उस एक अच्छे लड़के से बोलता जो कि उसके जैसा होता. अगर वो एप्पल होता तो एक बड़े पेड़ पे उग रहा होता, और जो अगर वो नीचे गिरता तो किस पे गिरता? उसके जैसे एक अच्छे लड़के के ऊपर. और उस पेड़ पे वो कभी नहीं रुकता और वो नीचे गिरता और बोलता कि मुझे खा लीजिए. सो दैट्स द पोम चिल्ड्रन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ओके, सो द पोम इज अबाउट एन एप्पल. सो चिल्ड्रन, यू नो एप्पल इज़ वेरी न्यूट्रिशियस. एक कोट है ना, आपने सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. आप अगर डेली एक एप्पल खाते हो तो आपको कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा. ओके, सो एप्पल इज़ वेरी न्यूट्रिशियस. ओके, so the summary of this poem, that the poet says if he were an apple he would not stay on the tree. पोइट कहता है कि अगर वो एक एप्पल होता तो उस पेड़ पे कभी नहीं रुकता. ही वुड श्योरली फॉल ऑन सेम गुड चाइल्ड. वो अपने ही जैसे एक अच्छे लड़के के ऊपर जाके गिर जाता. एंड टेल द चाइल्ड टू ईट हिम. और बच्चे को बोलता कि मुझे खा लो. ओके, सो दैट्स ऑल द पोम. ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू न्यू वर्ड्स. एप्पल, APPLE, apple. BOY, boy, a child, लड़का. EAT, eat, eat खाना.
D-R-O-P, drop, drop, to fall on, to fall down. गिरना, joy, J-O-Y, joy, happiness, खुशी. Okay, now come to questions, children. These questions answers I will send you a PDF on WhatsApp. Okay, we are discussing now. First question, where is the apple? So answer will be the apple is growing on a long tree, on a big tree. Where is the boy? So answer will be the boy is under the tree. Question number 3, how can the boy get the apple? So answer will be the boy will get the apple when it falls down. Okay, let's talk, children. Do you like apples? Yes, we all likes apple. Have you ever climbed a fruit tree? आप कभी एक fruit tree पे चढ़े हो? No, I never climbed a fruit tree. Why? Because it's too risky and we can't do this. Okay, fill in the blanks. If I were a bird, I would dash, fly, cry. अगर मैं एक पक्षी होता, एक बर्ड होता, तो मैं क्या करता? रोता? No, fly. Yes, I would fly, F-L-Y. Next, if I were a bee, I would dash, buzz और chirp. बी क्या करती है? बज करती है. और चर्प कौन करता है? बर्ड. यस. सो इफ आई वर ए बी आई वुड बॉस, B-U-Z-Z. ओके, लेट्स रीड एंड राइट. STUV. हमने आर तक पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने आर तक राइट किया था. ओके, और नाउ आपको इन पे ट्रेस करना है. STUV. ओके, नाउ वी हैव crossword. ओके, fill in the letters to complete the crossword puzzle. Use the picture as clue to find the fruit. Okay, so children, here are some fruits picture: pear, apple, banana, mango, grapes and orange. Okay, so you all know fruits name. Okay, now come to spelling part. Okay, so orange, O-R, which letter come here? A-N-G-E, orange. Now come to grapes. grapes की spelling क्या होती है? G-R-A-P-E-S. so G-R-A-P-E-S, grapes. Third is mango. mango की spelling M-A-N-G-O, mango. Okay, now come to fourth. what is this? banana. banana की spelling क्या होती है? B-A-N-A-N-A, banana. fifth is apple. apple की spelling A-P-P-L-E, apple. last is pear. P-E-A-R, pear. Okay, so children, you have to learn the fruits name also. Okay, which is your favorite fruit? Say why you like it first in your own language and then in English. So you have to write in your notebook, children, about your favorite fruit. Okay, so that's all for today, children. Okay, so learn the chapter, read this poem. Okay, thank you, have a nice day.